beautiful. Yes, he is the one. She's very shy. Hello everyone, this is Azan Vlog. Welcome and welcome back to my channel. So today I am here at Recycle Cafe, which is known as Bird Watching Center, and this is located in jatinga Haflong. मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन I thought of showing you all, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है दिमा हासाओ के बाहर और जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, this is for them. So let's go and see कि कैसा है. I think this is handmade, जो कि यहाँ के ओनर ने बनाया है. I know him, so let me introduce him to you all also. So let's go. वो है कि नहीं देखना पड़ेगा. Let's go. Welcome to Bird Watching Center का Recycle Cafe. ऐसा व्यू ना आपको कहीं नहीं मिलेगा. देखो, this is just awesome. So this is the view from Recycle Cafe, and this is our Baril Mountain, and yeah, व्यू बहुत अच्छा है. और इस साइड से हारंगजाओ जाता है, हारंगजाओ सिलचर, एंड दिस वे माईबांग लंगटिंग लमडिंग ये सब जाता है. एंड दिस इज जटिंगा रोड. यू कैन सी this is nice. This is very beautiful. Yes, he is the one. Cheers. So let me introduce you to him. और ये flower देखो. Let me take you to the upper view. This is Hello. Welcome to Recycle Cafe. You are having coffee. Yeah, I'm having black coffee. Please introduce yourself. Oh yeah, myself Landy Hakmosa. I'm from this Recycle Cafe. Thank you for visiting to my place. Yeah, he is very nice guy actually. Yeah, we all are nice. That's why we are nice. So this is the view, and here is the table. Yeah, यहाँ से आए थे हम लोग. And this is jatinga village, right? और दूसरा नाम ही क्या इसका? बस jatinga. हाँ. Yeah, this is jatinga village. It's actually मतलब ये बहुत साफ सफाई है ना यहाँ का. बहुत साफ है. This is the one of cleanest like a place you can say. People doesn't litter the places. No, she is my cameraman for today. जब बारिश दिया था दिमा हासाओ में, मैं उस टाइम पे आया था यहाँ पे, और अभी फिर से सेकंड टाइम. दिस इज़ माई सेकंड टाइम. एंड बाकी हाँ, ये इस कैफ़े में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है. मतलब जैसे कि क्रैक वो सब हो गया है थोड़ा सा वॉल में. एंड और ये जाटिंगा प्लेस में बहुत सारे जगह में इफेक्ट हुआ है. जैसे कि लेट मी शो यू. ये घर जब हम लोग आया था बारिश के थोड़े दिन बाद, तो ये घर पूरा क्रैक था. ये देखिए आप. एंड ये बिल्डिंग जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, ये भी पूरा टूट चुका था. ये यहाँ देखो, दिस इज जाटिंगा विलेज. सो टू माई सब्सक्राइबर who are from outside, like out of Dima Hasao, who have not visited this place yet, so please, Dima Hasao Haflong बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छा जगह है. It's very clean and green, so please visit my hometown.
और if you ever come to visit my hometown, if you ever come to visit my hometown, Dima, Hasao, Haflong, so you can take me as your guide. I can guide you. You can take me. So अभी इसको बहुत भूख लग गया है बोला. So let's check the menu कि क्या क्या है. I'll show you क्या क्या मिलता है. Let's go and check. So यहाँ का जो मेन्यू है उसका प्राइस भी लाइक बजट में है, बहुत अच्छा है. सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना कितना प्राइस है. सो अभी हम लोग अपना ऑर्डर देंगे. सो आई हैव ऑर्डर चिकन टुक्पा एंड चिकन पास्ता एंड 2 रेगुलर कॉफ़ी. सो लेट्स वेट फॉर द मेन्यू, और नॉट मेन्यू, फॉर द ऑर्डर. गाना अच्छा है ना? मैं आपको सुनाई नहीं दे रहा यहाँ से. आई थॉट ऑफ मेकिंग, मतलब मैं सोचा था कि इस जटिंगा पार्क में तो बहुत सारा अभी खुला है ना, गैलरी वो सब. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग टुगेदर, बट वो जो सोंको किचन मीन्स किचन और सोंको बड़ा हाफलंग व्यू पॉइंट वो आज नहीं खुला था. आई थॉट मेकिंग टुगेदर एक साथ, मतलब वहाँ से आते आते मैं एक साथ ब्लॉग बनाऊंगी ये सोचा था, लेकिन वो बंद है. और एक गैलरी है बीच में, मैंने सोचा था कि वो भी एक साथ आज ही कर दूंगी, लेकिन फिर भी वो खुला नहीं था. सो आई हैव टू मेक इट सेपरेटली. दूसरा दिन बनाना पड़ेगा वो ब्लॉग. सो I'll be your guide for some days. जब टाइम मिलेगा तब मैं आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसा. मैं सोच रही कि अपना बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन it depends on money. Let's see क्या होता है. This is today's weather. She's very shy. रील्स में नाचने में उसको शर्म नहीं लगता है, लेकिन मेरा वीडियो में आने में बहुत शर्म लगता है इसको. I can't wait to eat. खा लिया हम लोगों ने. हाँ, अभी हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बिल पे करना है. एंड हाँ, दिस इज़ jatinga बर्ड वॉचिंग सेंटर कम रिसाइकल कैफ़े. सो थैंक यू so much for watching everyone. See you in the next vlog.